Hello everyone, my name is Anu. Today we'll read the next lesson of class 3 E.V.S, sharing our feelings. Students, in this lesson, it is told that we should share our feelings with others. Okay, you also keep on sharing your feelings with your parents, your mom, dad, your grandparents, or your friends. Okay, and how do all the people share their feelings with others? Right? Let's see what is there in this lesson. After returning from home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. Now, there is a girl in this lesson, Seema, who is telling her story that after returning home from school, that when she returns home from school, she tells her tales, her story to two people, right? And you must also, आप लोग भी अपनी स्कूल से घर आके अपनी बात आपने स्कूल में क्या किया पूरा दिन, है ना, किससे मिले, किससे क्या बात की, क्या पढ़ाई की, सब कुछ आके अपने घर पे बताते हो अपनी मम्मी को या पापा को या अपनी सिस्टर को या ब्रदर को, है ना, या अपने फ्रेंड्स को, है ना. सो लाइकवाइज यहाँ पे भी इस लेसन में शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स में देयर इज अ गर्ल सीमा जो बताती है अपने घर पे आके अपनी न्यूज दो लोगों को. कौन से दो लोग हैं वो? The first person is my nanny. She is always anxious to listen to me. She waits for me to return from school. She is quite old and often has back pains. She cannot see or hear well. Every day in the morning, Papa reads the newspaper aloud to her. She does the rest of her work herself. If someone tries to help her, she gets very upset. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. She says these days children do not know how to cut vegetables properly. तो कौन पहला है? पहला इंसान कौन है जिसको सीमा अपनी बात बताती है? वो उसकी नानी है जो उनके साथ में रहती हैं. वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं और वो बहुत वेट करती हैं कि कब सीमा स्कूल से घर आएगी और कब वो मुझे अपनी बातें बताएगी. ठीक है, उसकी जो नानी है वो थोड़ी ओल्ड हो गई हैं, उनको बैक पेन रहता है, सुनाई भी उनको ठीक से नहीं देखता है, वो ठीक से देख भी नहीं पाती हैं. और हर रोज जो उसके पापा हैं वो उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्योंकि वो तो ठीक से देख सुन नहीं सकती, है ना. सो उसके बाद शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क. बाकी सारा काम वो खुद करती है. सिर्फ पापा उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बट बाकी सारा काम वो खुद करती है अपना. और उसको पसंद नहीं कि कोई और उसको हेल्प करे उसकी मर्जी के बिना, है ना. और यहाँ पे वो कहती है कि उनको वेजिटेबल्स कट करना बहुत पसंद है. वो कहती रहती हैं कि आजकल के बच्चों को वेजिटेबल कट करनी नहीं आती. ठीक है. सो द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया. और जो सेकेंड पर्सन है जिनको सीमा अपनी बातें बताती है वो है उसके रवि भैया. He lives with us. I call him Ravi Bhaiya and he calls my parents Bhaiya Bhabhi. I do not know what our relationship is, but he is very loving brother. He is always ready to answer my questions. He never says, I will tell you later. Okay, और जो दूसरे हैं वो हमारे रवि भैया हैं. उनको रवि भैया कहती है वो उसके पेरेंट्स को वो भैया भाभी कहते हैं. वो कहती है कि मुझे नहीं पता वो कौन है, उनके साथ हमारा क्या रिलेशन है, बट वो बहुत ही प्यारे से भैया हैं और वो मेरी सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं. वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैं बाद में बताऊंगा. रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज. ओके, द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम. Ravi Bhaiya is very fond of listening to music and taking part in plays. He enjoys chatting with his friends and going out with them. He has a good sense of humor and makes all of us laugh. तो वो अपने रवि भैया के बारे में बताती है कि उसके जो रवि भैया हैं वो कॉलेज में पढ़ाते हैं. उनके स्टूडेंट्स उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. कुछ उनके घर पे उनसे ट्यूशन लेने आते हैं और रवि भैया को म्यूजिक सुनना, प्लेज में पार्ट लेना बहुत पसंद है. उन चैटिंग करना अपने दोस्तों से, उनके साथ घूमने जाना, ये सब उनको बहुत पसंद है.
और उनका बहुत ही ह्यूमरस नेचर है, मतलब वो बहुत मजाकिया हैं और सबको हंसाते रहते हैं। तो भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। अच्छा, तो भैया जो हैं उसके वो वाइट स्टिक लेते हैं जब वो बाहर जाते हैं। अब आप बताइए जरा मुझे, व्हाइट स्टिक कौन लेता है? जब आप रोड पे आप देखते हो कि एक व्हाइट स्टिक के साथ कोई अगर चल रहा होता है, तो आप क्या समझ आता है आपको कि वो क्या प्रॉब्लम होगी उनको? यस, वेरी गुड। वो जो है ब्लाइंड पीपल जो होते हैं वो व्हाइट स्टिक कैरी करते हैं। लुकिंग एट हिम he goes looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. He likes to do all his work himself. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. ओके, सो जो उसके भैया हैं वो बताती है कि जो वो घर में चलते हैं ना, इधर उधर मूव करते हैं, तो कोई भी नहीं कह सकता कि उनको कि वो ब्लाइंड हैं, क्योंकि घर में उनको हर चीज पता है कि क्या चीज कहाँ रखी है, क्या चीज कहाँ पे नहीं रखी है, या क्या चीज कैसे करनी है, कहाँ पे कैसे जाने। तो घर पे तो वो ऐसे लगता है कि जैसे वो देख सकते हैं, पर जब वो बाहर जाते हैं तो वो व्हाइट स्टिक लेके जाते हैं, क्योंकि वो ही इज अ ब्लाइंड मैन। और उनको भी अपने सारे काम खुद करना पसंद है। वो उनकी मर्जी के बिना अगर उनको हेल्प करो तो उनको को गुस्सा आ जाता है, और उनको जब जरूरत होती है तो वो हेल्प मांग लेते हैं। Some of Bhaiya's students take book from him and return them after recording them on tapes. भैया रवि भैया listens to these tapes. ओके, वो कहती है कि रवि भैया के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनसे बुक्स लेके जाते हैं और उनको रिकॉर्ड कर देते हैं टेप्स पे, और फिर रवि भैया उनको सुनते हैं उन टेप्स को। भैया हैज मैनी अदर बुक्स टू। The pages of these books are thick and have rows of raised points. He reads by running his fingers on the raised ones. Now she said कि भैया के पास और भी काफी सारी बुक्स हैं और वो बहुत मोटे पेजेस की हैं और उन पे डॉट्स उभरे हुए होते हैं, और भैया उन डॉट्स को टच करके पढ़ते हैं कि क्या लिखा होता है। अब आप मुझे बता पाएंगे क्या कि वो कौन सी बुक पढ़ते हैं? यस बेटा, वेरी गुड। कि जो बुक्स वो पढ़ते हैं वो ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी होती हैं, राइट? ब्रेल बुक्स होती हैं। आप जानते हो कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो ब्रेल बुक्स की हेल्प से पढ़ते हैं। उनके लिए स्पेशल बुक्स बनाई जाती हैं, ब्रेल जिनको कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि डॉट्स उभरे हुए होते हैं और उन डॉट्स को टच करके पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। Okay, to have fun with Bhaiya, I sometimes change the place of his stick. He does get upset, but never gets angry. After all, I am his favorite sister, Seema. और वो बताती है कि भैया के साथ कभी कभी मजाक करने के लिए मैं उनकी स्टिक छुपा देती हूँ। वो गुस्सा तो होते हैं पर कभी मुझे डांटते नहीं है। वो उदास होते हैं पर कभी गुस्सा नहीं होते, क्योंकि मैं उनकी फेवरेट सिस्टर हूँ, सीमा। I had hardly reached the door that Bhaiya spoke up. Seema, you seems to be very happy today. Bhaiya recognizes not only me but all the other family members from the sound we make as we move. He can even tell whether I'm happy or sad. Okay, you know that she was telling कि जैसे ही वो डोर पे आई, बेल बजाने वाली थी, इतने में ही उसके भैया ने कहा कि अरे सीमा, आज तुम बहुत खुश दिख रही हो, क्योंकि उसके भैया उसको उसकी आवाज से, चलने के तरीके से ही पहचान जाते हैं कि वो आज खुश है कि नहीं है, और वो सारे फैमिली मेंबर्स को उनके चलने के तरीके से पहचान जाते हैं। बिकॉज जो ओल्ड पीपल, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं बच्चों, उनके अंदर दूसरी सेंसेस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हियरिंग सेंस उनकी बहुत पावरफुल होती है, और उनकी हियरिंग मतलब चलने के तरीके, किसी की मूवमेंट से वो सुन के अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या मूड है। ठीक है भैया, फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। आई शेयर्ड माई न्यूज विद हिम। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। अब सीमा ने बताया कि वो खुश क्यों है, क्योंकि वो फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गई है। तो भैया ने उसको शाबाशी दी और कहा कि ठीक है, आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच है। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। Seema's father reads the newspaper aloud to her nanny. How do you help old people? So I help old people when I get a chance. I help my grandfather in searching his spectacles.
I go with him for his evening walks. What kind of problems do people have in old age? So people may face following problems in old age, like they cannot see properly, they cannot hear properly, they cannot eat properly, they have pain in their knees and other joints. Right? You can write the answers from here. Now there are some more questions. How does Ravi Bhaiya come to know so many things without seeing? So Ravi Bhaiya comes to know so many things by hearing. Blind people have very strong sense of hearing. Have you ever needed a stick when? No, I have never needed a stick. Can you think when you may need a stick? कब आपको स्टिक की जरूरत हो सकती है? When we get a fracture or sprain in leg, or when we have to climb a rock or a mountain. ठीक है, तब आपको स्टिक की नीड हो सकती है. How do we help those people who cannot see? So we can help visually challenged in following ways: by offering seat in buses, by helping them in climbing upstairs, by reading out news for them. Right? So is there any member in your family who cannot see, speak or hear? Do you know any such person? How do people help them with the work? You read in the story that Ravi Bhaiya cannot see, but he does all his work on his own. He studies from different kinds of books to understand how he is able to do his work. Close your eyes and play this game. Now यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ब्लाइंड फोल्ड वाला गेम खेल के देखो, आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है ब्लाइंड लोगों के लिए अपने काम, रेगुलर काम करना, है ना. ब्लाइंड फोल्ड गेम आपको पता है कि एक बच्चे की आंख पे पट्टी बांधो और फिर उसको टच करने के लिए कहो और उसको उससे पहचान करवाओ कि क्या चीज है. लाइक ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप. One by one, the other children come to him or her quietly. The child who is blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? In the same way, one by one, blindfold all the other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. ठीक है, वो कहता है कि एक बच्चे की आंखों पे पट्टी बांध दो और उसको फिर टच करने के लिए कहो बाकी बच्चों को, और पहचाने वो कि कौन सा बच्चा कौन सा है. इस तरह से सबकी बारी आए और फिर देखो कि आपने कितने लोगों ने पहचाना, कितने लोगों ने नहीं पहचाना. सो हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग? दिस मे बी वेरी, द आंसर मे वेरी, लाइक 2 I have written. How many children can recognize the other children by only hearing them? Answer 4. Which was easier of the two? It was easier to recognize by hearing, क्योंकि आवाज सुन के आप जल्दी से पहचान सकते हो, टच करने से पहचान नहीं पाओगे. How many things can you recognize only by touching? टच करने से आप किस किस को पहचानोगे? I can recognize cloth, glass, metal, wood, clay, etc. only by touching. And by just smelling, can you guess if it is some person close to you or if it is some animal? क्या आप स्मेल करके पहचान सकते हो कि कौन है? तो yes, I can guess if it is an animal or a person by smelling. Now, there is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called Braille. I told you, it is written on a thick paper by making a row of raised points with a pointed tool. Braille is read by running the fingers on the raised dots. Let us see whether it is difficult or easy to recognize a shape without seeing it. वो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे हमने आपको बताया कि ब्रेल क्या होती है, उसमें 6 पॉइंट्स होते हैं और उनमें से कुछ पॉइंट्स को उभारा होता है, डॉट्स बने होते हैं वहां पे, और उन डॉट्स को टच करके आपको पहचानना होता है. तो यहाँ पे एक आपको बताया है कि एक थिक पेपर लो, उस पे डॉट्स उभारो और नीडल से, और फिर उसको टच करके पहचानो कि क्या तुम पहचान सकते हो. ये देखिए ऐसी होती है ब्रेल स्क्रिप्ट. यू हैव सीन रवि भैया रीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स. हाउ वेर दीज बुक्स मेड? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स? लेट अस फाइंड आउट. आप देख रहे हो जैसे पिक्चर में ब्रेल स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जैसे लेटर लिखा हुआ है अल्फाबेट ए. हाँ, तो इसमें 6 डॉट हैं, हर लेटर के लिए 6 डॉट होंगे और उनमें से कुछ डॉट्स को उभारा गया होगा. जैसे ए में फर्स्ट डॉट को उभारा है,
जैसे बी में फर्स्ट और सेकंड को उभारा है, सी में आप देखोगे कौन अलग से 2 डॉट्स को उभारा है, डी में 3 डॉट्स हैं, ई में भी डॉट्स हैं पर अलग अलग हैं। ठीक है, अब कौन से डॉट उभरे हुए हैं उसको फील करके पहचाना जाता है कि कौन सा वर्ड या अल्फाबेट लिखा है। और सबसे पहले किसने स्टार्ट किया ये ब्रेल स्क्रिप्ट? तो लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। तो एक इंसान थे, देयर वाज अ पर्सन, हिज नेम वाज लुइस ब्रेल, और वो फ्रांस के रहने वाले थे। One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. He had keen interest in studies. He did not give up. He kept thinking of different ways to read and write. Finally, he found a way, reading by touching and feeling. This way of reading later came to be known as the Braille script. ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ था, जो लुइस ब्रेल थे वो बचपन में अपने खेल रहे थे, अपने जब 3 साल के थे अपने पापा के टूल्स के साथ खेल रहे थे, तो एक जो शार्प टूल था वो उसकी आंख में लग गया और उसकी आईसाइट चली गई। अब वो उनको बहुत पढ़ने का शौक था। अब वो सोचता रहा कि किस तरीके से मैं पढ़ूं, किस तरीके से मैं क्या करूं कि मैं पढ़ पाऊं, क्योंकि उसकी आईसाइट तो थी नहीं, ही वॉज ब्लाइंड। तो उन्होंने काफी मेहनत के बाद या काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने फाइंड आउट किया कि टच करके फील करके पढ़ा जा सकता है। तो उन्होंने फिर टचिंग एंड फीलिंग के द्वारा उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, और यही वाली जो टेक्निक थी उनकी रीडिंग की, ये बाद में ब्रेल स्क्रिप्ट के रूप में उभर के आई। और इसका नाम ब्रेल स्क्रिप्ट क्यों रखा गया? क्योंकि ये लुइस ब्रेल के नाम के ऊपर रखी गई। In this type of a script, a row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. This script is based on 6 points. The Braille script has undergone many changes these days. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. ठीक है, अब आपको जैसे मैंने बताया कि रेज डॉट्स होते हैं, उसमें डॉट्स उभरे हुए होते हैं और 6 डॉट्स का पैटर्न होता है। ठीक है, उसको टच करके फील करके रीड किया जाता है। अब तो काफी चेंजेस आ गए हैं ब्रेल स्क्रिप्ट में, और भी इजी उसको बनाया जा चुका है। अब तो कंप्यूटर्स पे भी लिखा जा सकता है ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, लेसन हमारा खत्म हो गया है। लेट्स सी द व्हाट इज द समरी दैट वी हैव लर्नड। सो वी ऑल want to share our feelings with other people. Yes, old and physically challenged person need our love and care. They are not dependent on us. We should help them only if they need to ask for it. Old people are physically weak. The blind learn Braille script. Braille script is written on a thick paper with a pointed row. It is read by running fingers on the raised dots. Braille can now be written using the computer, and Louis Braille is known as the father of Braille script. Right, now we have some fill-ups. There is a help box also. You have to write the correct answer. We all want to share our feelings. Old people are quite helpless. People who cannot recognize other people by their smell or by the sound they make. We should help old people if they need it. Braille script is read by running the fingers on the raised dots. Louis Braille is the father of Braille script. The blind use a white stick when they go out. Old people need love and care. Okay, do it yourself. Okay, now let's see the next. Answer the following questions. With whom do you share your feelings? So you can tell with whom, with your mother, father, brother, sister, whomever you share your feeling. How do you help your grandparents or old people? Okay, I have already told in the video that how do you help. You can write how do you help your grandparents. Then write any one thing that your nani loves to do. आपकी नानी को जो पसंद है, you have to write it. What kind of problems do old people have? Right? This we have already discussed. Write it on your own. Why do blinds carry white stick when they go out?
they carry white stick so that other people may find out that yes, the person is not able to see, and so they can get a sight. Okay, so that's why they carry a white stick. Who invented script for blinds? This was Louis Braille. Now match the following. Old people are physically weak. Blind people have strong smelling and hearing senses. Braille script is written with pointed tools. Script means signs of letters, and old people need love and attention. Write 5 sentences about the Braille script. This is your homework. You have to do it on your own. Okay, that's it, students. Thank you so much for watching the video. Stay tuned with me for my next video. Till then, take care and enjoy learning.